are at 55%. So non-current assets in our case are not some big buildings or plants, but mainly non-current assets are equipments that we use, like computers and servers and etc. And more importantly, are IPs that we are developing. So these are the non-current assets, which constitute 55% of the total assets. When it comes to capital structure, you can see that 75% is our equity and only 25% is the liability. So we are not leveraged. However, as the interest, you can see that the interest rates are going down and the outlook for interest is also good. We see this as one factor that should be helpful to fuel our expansion plans. Now, coming to the revenue and cost. So these are the top 5 local customers that we are serving. And all of these customers on this slide, they are active customers. So Jazz is our biggest line. Then we've got HBL, PNG, JS Bank, and MCB and EBM, in fact, English Biscuits. When it comes to top 5 export customers, you can see that we have got these are companies from UAE, US, and Caribbean. Digicel is the largest telco operating out of Caribbean. Hummingbird is a US-based company. Then we've got Alwaha, S Ventures, and Luminous. Some are, in fact, all 3 of them, they are based out of UAE. Revenue concentration is 80% is coming in from the top 10 clients, while 20% is from the other clients. So here, this is the graph on the left is an important graph, because if maybe some of you may remember that when we are doing the IPO, our presentations had this graph there, and we were targeting 50% of our revenues from exports, and we have, mashallah, reached that number in the very first year of our listing. So 50% now is coming in from Pakistan, while the remaining 50% is coming through exports. Then we have on the right revenue by business. So transformation is by far the most revenue generating vertical for us now. Transformation के अंदर ही हमारी products भी included हैं जिनके revenues आना हमें कुछ शुरू हुए हैं, और further भी ये number हमारा with time should increase as the products scale. 23% is coming in from interactive, and still ये छोटा number है from mobility and commerce, जिसको हम target कर रहे हैं, and mobility से तो बहुत ज़्यादा हमें promise है, क्योंकि in coming year proposals जो हमारे float हुए हैं market में, and with completion of Mobits, which is a robust platform, ये numbers increase करेंगे इंशाल्लाह. Then there is this revenue by industry. So we have a very healthy mix. Different industries हैं, जिसमें banks and financial institutions, they constitute 18%, 25% is coming in from telcos. Then we have got technology companies, FMCGs, and trading. On the right side is the cost breakup. So just like any other technology company, हमारा भी जो HR cost है, that constitutes the most of our cost. It is 54%. Then we have got traveling, IT के expenses हैं obviously. उसके बाद हमारा एक depreciation amortization का number भी काफी आपको बड़ा दिख रहा है यहाँ पे. It is 13%, and again it is due to the fact कि हमारे जो हमने assets develop किए हैं, उनकी amortization भी जो completed assets हैं वो शुरू होगी.
Marketing is standing only at 2% at this point in time, but this has to increase significantly. And as a rule of thumb, it has to be somewhere around 11 to 15%, just like any other business, if we have to scale. So in coming years, we see this number to grow significantly to fuel the increase in revenue. This is a financial performance snapshot. You can see that our revenues are constantly increasing, CAGR of 24% from in between 2019 and 24. Then the operating profit has increased also. Net profit पे भी increase बहुत अच्छी healthy increase है. But I would like you to focus on the graph on the left bottom, because this is the normalized number. Because last 2023 versus अगर आप 24 normal net profit हमारा regular देखते हैं, so there is a decline showing. But on the left side, if you see the net profit normalized, which is adjusted for any for the abnormal exchange gains that we had in 2023, it was around 30 million. We reported this amount in our all our results and annual reports as well. And then there is a change in accounting due to IFRS 16. So because of these two reasons, 2023 को अगर हम normalize करें तो it comes to 128 million, and जो हमारा 2024 का revenue है, it grows to 144 million. So there is healthy growth there as well. As to our earning per share, you can see that it before जो last इसमें relevant जो है वो 2023 and 24 ही है. तो अगर हमारा प्री इशू, क्योंकि 30 जून 2023 हमने क्लोजर किया था, उस वक्त इक्विटी हमारी ऑब्वियसली कम थी. जो न्यू इशू है उसके बाद भी हम काफी हद तक सस्टेन कर रहे हैं अपने नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स के अंदर. 0.65 से 0.6 पे इस वक्त वो आ गए हैं ड्यूरिंग द लास्ट 1 year. Then there is this healthy growth in our share price. You can see that on 28 September 23, it was around 3.67 rupees. This was right after the IPO. Or आज it is standing at 10.99. So this is a very healthy growth. And I'm thankful to our investors who have confidence in our performance and future of the company, because of which यहाँ पे number नजर आ रहा है float होता हुआ. Now I'm coming to the growth strategy of the company. So this slide is very important. इस slide के ऊपर ही हमारा पूरा जो plan है growth का वो rely कर रहा है. So basically there are 4 E's of our growth. So the 4 E's are employees, efficiency, expansion and equity. अगर आप इसको पूरी तरह से देखेंगे, and this is available to you guys on the public portals, हमारी वेबसाइट पे भी होगा, you can dive into it further. So this is a very well thought of जिसमें हमारा फोकस, मैं कुछ की बातें कर लेता हूं बिकॉज ये बहुत बड़ा है. तो हमारा जो की फोकस है वो अपनी एफिशिएंसीज इंप्रूव करने में है. जहां पे हमारे कस्टमर्स की प्रॉफिटेबिलिटी जहां पे आ रही है, उनको वी नीड टू आइडेंटिफाई देम, एंड वी आर आइडेंटिफाइंग प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, और उनकी रिटेंशन पे हम ज्यादा काम कर रहे हैं. देन इज ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन. ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए दोनों चीजें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव गॉट एक्सपेंशन, जहां पे हम टारगेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, न्यू प्रोडक्ट्स और इनोवेशन को, because technology is all about innovation. Then we have got expansion plans extensive for newer markets out of Pakistan. Saudi Arabia we have been visiting and we are in talks with people. Qatar mein we have aligned a strategic partner.
UAE में भी वी आर ट्राइंग टू एंटर द मार्केट, और हमने जो है कुछ नए कस्टमर्स के ऊपर काम शुरू किया है विद certainly a totally new set of our products, including Servet, और जो आपसे हमने भी और प्रोडक्ट्स दिखाए। देन कम्स इन एम्प्लॉयज। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एम्प्लॉयज हैं, रिसोर्स हमारी। उसमें हम पूरा ख्याल करते हैं कि डाइवर्सिटी, इंक्लूजन हो। वी शुड बी एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ द लॉट जो इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं। चैलेंजिंग है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर रिसोर्सेज आईटी की, क्योंकि आपको पता है ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। बट ये कि हम लोग एक हेल्दी कल्चर मेंटेन करते हैं एचआर के अंदर। पहले हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं था, अब हमने एचआर की पॉलिसीज को और ज्यादा उस पर काम कर रहे हैं। वी हैव हायर्ड अ कंसल्टेंट, और हमारी जो एचआर कमेटी है बोर्ड की, वो भी उस पर क्लोजली काम कर रही है। जितना ज्यादा लुक्रेटिव हम बना सकते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स एंड अदरवाइज कल्चर वाइज भी, वो कोशिश हमारी पूरी है ताकि हमारी जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो अपनी जगह पे कायम रहे और हम बेस्ट टैलेंट के साथ काम करें एट ऑल टाइम्स। देन इज इक्विटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं, स्टार्टअप्स के साथ एंगेजमेंट देख रहे हैं। आपने देखा होगा ड्यूरिंग द ईयर हमने पार्टनर किया है विद फाइनॉक्स, जो इन्वेस्टर लाउंज के ओनर्स हैं। तो उनके साथ हमने एक किसी किस्म का अरेंजमेंट किया है जिसमें हम उनको स्वेट इक्विटी हमने उनसे ली है, और उस उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, बिकॉज वी डोंट हैव एट दिस पॉइंट इन टाइम दैट सॉर्ट ऑफ फंड्स के जहां पे हम जाके डायरेक्ट कैश इन्वेस्टमेंट्स करें। तो हमारा प्लान सबके लिए यही है, स्टार्टअप्स के लिए, कि इफ वी फाइंड इट अ गुड स्टार्टअप, अ लुक्रेटिव स्टार्टअप, हम उसके अंदर जो है ना अपनी सर्विसेज के थ्रू, स्वेट इक्विटी के थ्रू, अपनी एक्सपर्टीज पे उनको कंसल्टेंसी देके, या डेवलपमेंट की सर्विसेज या मार्केटिंग की सर्विसेज, या वॉट एवर सर्विसेज दे नीड विच वी आर प्रोवाइडिंग आउट ऑफ आवर सेट, उसके थ्रू हम पार्टनर करें और उसके थ्रू हम अपनी जो स्टेक्स हैं उसको बाय करें उस कंपनी के अंदर। अच्छा, जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में ये भी आता है कि हम रोबस्ट टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं। कोई भी चीज जो हमारी प्रोडक्ट लाइन को, सर्विस लाइन को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, हम उसको भी देख रहे हैं। और ये दोनों तरफ से है, मतलब हम इसमें R&D के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। वी हैव अ टीम जो कि डेडिकेटेडली इस वक्त प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। इट्स अ लीन टीम बट दे आर वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम इनेबल कर रहे हैं एआई पे, और आगे हम आपको कुछ अभी और भी चीजें बताएंगे जो कि एआई पे हमारा फोकस है। मूविंग फॉरवर्ड, हियर इज आवर फ्यूचर आउटलुक जी। एआई इज द वे फॉरवर्ड, इसमें कोई शक नहीं है। ये नहीं कह सकते कि एआई इज फ्यूचर, एआई इज नाउ। तो इट इज द वे फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपसे कहा, इस पे हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इस पर। देन एक्सपेंशन बियॉन्ड बॉर्डर्स, ये हमें ऑब्वियसली डॉलर रेवेन्यूज जो हैं वो स्टेबिलिटी देंगे हमारे रेवेन्यूज को भी। और जो हम एक जो एबनॉर्मल शॉक्स जो आते हैं एक्सचेंज की वजह से, उसके अगेंस्ट भी हमें सेफ गार्ड करेंगे और स्टेबलाइज करेंगे। देन एक स्ट्रैटेजी हमने अब ये की है अपनी पिछले 1-2 साल से, वी आर ट्राइंग टू डेवलप आवर सॉल्यूशंस, कस्टम सॉल्यूशंस, इन अ वे कि हम उनको एज अ प्रोडक्ट कार्व आउट कर सकें separately. So if we are developing a certain product solution for a customer, हम उसको इस तरह से बनाएंगे कि कल को हम उसमें मॉडिफिकेशंस करके उसको अपना प्लेटफॉर्म बना सकें और अपने प्लेटफॉर्म की तरह से भी लॉन्च कर सकें। Then investment and strategic partners to scale our products globally. So we are on a constant lookout. ये opportunities के ऊपर we are in discussion with various institutions, companies and individuals, especially in GCC, जिनके साथ हम बात कर रहे हैं कि जी हमने उनको कुछ प्रोडक्ट्स भी अपने दिखाए हैं, और वहां पे ये डिस्कशन हो रही है कि किस तरह से इसको स्केल कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू यूटिलाइजिंग देयर नेटवर्क, और इवन फंड रेस करके भी, इफ वी नीड मनी फॉर मार्केटिंग विच वी नीड डेफिनेटली टू गो ग्लोबल, उस पे भी हम उनसे बात कर रहे हैं। और इस साल में हम कोशिश पूरी हमारी है कि हम ये पार्टनरशिप्स ज्यादा से ज्यादा साइन कर सकें।
Then again, as I said earlier in my presentation, lowering interest एक opportunity है to fuel our growth plans. क्योंकि अभी तो we are not leveraged at all. 75% equity पे हम stand कर रहे हैं इस वक्त. So this can allow us and this will allow us कि अगर interest rate नीचे जाते हैं तो हम अपने आपको leverage करें और उसके through अपने जो growth plans हैं उनके लिए fund raise करें. और जैसे मैंने पहले कहा कि इन्वेस्टमेंट इन R&D ये एक कांस्टेंट चीज है. इसके ऊपर हमारा एक्सपेंस आपको नजर आता रहेगा कमिंग ईयर्स के अंदर भी. तो दिस इज प्रीटी मच फ्रॉम माय साइड अप टिल नाउ. एज द स्लाइड सेज, क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए द फ्लोर इज ओपन नाउ, बट डू वेट, वी हैव मोर आफ्टर दिस. Sarosh, should I start the meeting summary that I have a request for in front of me by Yes, Adeen? please. I think you'll have to share screen and start from your end. I've said yes to it, but I don't see anything happening. So which particular slide do you want me to put up? This is good. Let's keep it at this and start with the Q&A. Thank you. Okay, I'll start off by asking a few questions from the chat box, and then we can take questions from people asking the questions. How much of an earnings impact is the company expected from AI? The same person is asking, what are the major contributing factors increasing the share price from 4.25 to 4.99 since the IPO? So I didn't get your second question, but let me answer the first question first, and then I'll come to the second question. So the first question is, what are we expecting out of AI in revenue terms? So जितना भी आप ये समझें कि हमारे जितने भी टूल्स हैं जिन पे इस वक्त वी आर डेवलपिंग काम कर रहे हैं, उन सब में एआई कैपेबिलिटी है. और कि एआई की मार्केट जेन एआई से लेके डेटा एनालिटिक्स तक बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई है. तो ये मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है. हम तो अगर इसमें 0.1% भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो इट मनी विल स्टार्ट पोरिंग इन डॉलर टर्म्स में. सो अभी तो हम उस प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि जहां पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को स्केल करेंगे ग्लोबली. हाँ, व्हेन इट कम्स टू लोकल मार्केट पाकिस्तान में अभी तक एज यूजुअल हम पाकिस्तानी थोड़ा आहिस्ता चलते हैं, तो अभी तक इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा. बट ये कि हम अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ थोड़ा और बता सकता हूं कि वी आर इन टॉक्स विद सर्टेन एनबीएफआई डीएफआई इनफैक्ट वो जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रहे हैं. एक इंश्योरेंस कंपनी है जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है, और हमने जब उनको सेविंग्स दिखाई हैं, so if that insurance company is spending 1.5 billion on employee salaries, वो सब कुछ जो है ना वो within a period of 1 year to 2 year वो जीरो पे आ सकता है अगर वो एआई के अंदर इन्वेस्ट करें एट दिस गिवन पॉइंट इन टाइम. सो इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. मैं ऑब्वियसली स्पेक्यूलेटिव नंबर्स नहीं दूंगा इस प्रेजेंटेशन में because we have certain restrictions, but this should be big. As I say, AI is the way forward for our company. G, what was the second question, please? His second question is more about the stock price movement and how it has increased from, let's say, around Yeah, 4 I can't hear you clearly.
Can you hear me now? He's asking about the stock price movement. What are the जी factors that have led to stock price movement? दोबारा बोलिएगा. Saroj, the question pertains to the movement in the stock price and what factors do you believe have led to this price increase? हमारे पास Saroj, you're not audible. just a second. जी, am I audible now? बहुत कम आवाज आ रही है. It was little before though. अच्छा, एक मिनट. जी, am I audible now? Yes. Clear now. Good. So I was saying कि we have been from day one हम लोग बहुत honestly और ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. वी आर वेरी ओपन इन कम्युनिकेशन. हमें क्वेरीज भी आती हैं, उन पे भी हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं. कुछ शेयर होल्डर्स जो थोड़े ज्यादा परसेंटेजेस मेंटेन कर रहे हैं अपने पास, कुछ लोगों ने हमसे इंडिविजुअल मीटिंग्स भी की हैं. एंड वेन एवर दे हैव एनी क्वेरीज वो हमें अप्रोच करते हैं. एंड माई सेल्फ मैंने 2-3 मीटिंग्स की हैं अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स के साथ जिनकी भी कोई क्वेरीज थी. In addition to that, जो भी we don't hold back on information, जो भी मटेरियल इन्फो होती है वो हम इमीडिएटली डाल रहे हैं. तो ऑल दीज मेजर्स आई बिलीव ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं लोगों का. एंड दे कैन सी किस तरह से हम जो है ना, जो हमने कमिट किया है अपनी प्रोग्रेस के ऊपर, अपनी आईपीस की डेवलपमेंट के ऊपर, उस पे भी हम अपनी प्रोग्रेस उसी तरह से कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें हैं जो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही है शेयर होल्डर का, और उसकी वजह से ही ये प्राइस इंक्रीज आप देख रहे हैं रिसेंट टाइम्स में. Okay, our next question is from Hassan Raza. He's asking, in your last CBS, which was held in November 23, you said the company plans to double revenue from about 459 million in 2 years. So you on track to achieve about 900 billion revenue in FY25? And his second question is, are all the local contracts based in PKR and all export contracts based in USD? यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट मैं आपकी आवाज सही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ. उमर, कैन यू स्पीक प्लीज? आपकी आवाज थोड़ी Hang on. बेहतर. Just give me 1 minute. Fawad, can you send me the question so I can ask him? Okay. So the question from Mr. Hassan Raza is that in your last corporate briefing session in November 23, you said that the company plans to double revenue from 459 million in 2 years. Are you on track to achieve this number of around 900 million in FY25? देखिए, वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट. वी आर वेरी मच इन प्लेस टू टारगेट दैट नंबर, क्योंकि इस साल भी ग्रोथ अच्छी है और अभी तो प्रोडक्ट की लॉन्च आप समझें कि बिल्कुल टेस्ट रन में है. तो आई एम वेरी होपफुल कि जो नंबर हम टारगेट कर रहे हैं वो हम जरूर अचीव कर लेंगे. Okay, the second part of the question was that are all local contracts based on in PKR while export contracts in USD? जी, ऐसे ही होता है. Okay, now another question is that is the company considering, is the management considering to establish data centers which have a great scope? नहीं, इस वक्त पे तो हम डेटा सेंटर के ऊपर नहीं सोच रहे बिल्कुल भी, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर. ये इस तरह का हमारा इसका कोई प्लान नहीं है. व्हाट वी हैव प्लान्स फॉर इज टू कीप इन्वेस्टिंग इन द टेक्नोलॉजी. क्लाउड पे हम काम करें और एआई की अपनी कैपेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा बिल्ड करें, क्योंकि हम जिस स्पेस में हैं हम समझते हैं कि हम हार्डवेयर में नहीं जाएंगे.
हम जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर ही काम करेंगे और वहां पे एआई विल प्ले अ मेजर पार्ट। Pertaining to this, Sarosh, another question is why is the focus on software rather than hardware, like data center? यार दो किस्म की कंपनीज होती हैं दुनिया में। एक होती हैं हार्डवेयर कंपनीज लाइक आईबीएम एंड लिनोवोस, और दूसरी होती हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब आप सोच सकते हैं कि हमने कंपनी शुरू की थी विद कैपिटल ऑफ 1.5 लाख रुपए। तो हमारे पास जो है ना वो इतने पैसे ही नहीं थे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाएं, और आज भी हमारे पास उस किस्म के पैसे नहीं हैं। वो ना हमारी एक्सपर्टीज है। तो एक नॉमेनक्लेचर होता है कंपनी का, और वो नॉमेनक्लेचर यही है कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर रहेंगे। हार्डवेयर इज नॉट आवर एक्सपर्टीज, नीदर वी वांट टू गो इनटू दैट टेरिटरी। और Okay. दोनों किस्म के जो Next, मॉडल्स हैं, दोनों किस्म के जी, मॉडल्स आपके सामने हैं। हार्डवेयर कंपनीज अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं, बट रीसेंट टाइम्स में आप देख लें कि आईटी के अंदर जितनी बड़ी जो कंपनीज हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो जो स्टार्टअप्स थे, उनको आप देखें कि वो उन लोगों ने इसी तरह से ग्रो किया है सॉफ्टवेयर की साइड पे ही। जो कंपनीज लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वो एक अलग डोमेन में काम करें, तो दोनों जगह पे आपको सक्सेस केसेस मिलते हैं। okay. Sheroz wants to know that can you please briefly explain what sort of services are being offered to the telcos, especially Jazz? हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट है, उसमें हम उनको ट्रांसफॉर्मेशन और इंटरैक्टिव सर्विसेज दे रहे हैं। इंटरैक्टिव के अंदर आप उनकी जितना डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स देखते हैं ऑनलाइन, वो सारी हम ही करते हैं ऑन ऑल ऑफ देयर ब्रांड, ऑन ऑल ऑफ देयर ब्रांड्स। उसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, वहाँ डेवलपमेंट आ जाती है। टूल्स की डेवलपमेंट है, एपीआई की इंटीग्रेशन है, पोर्टल्स की डेवलपमेंट है, अम, उनकी वेबसाइट्स हैं, उनकी छोटी वेबसाइट, कॉर्पोरेट वेबसाइट, इंट्रानेट, कोई पोर्टल्स हों, उसके ऊपर भी हमें वो कॉल करेंगे। मतलब दोनों ट्रांसफॉर्मेशन और इंटरैक्टिव वर्टिकल्स के अंदर हम उनको कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। Thank you. Ibrahim Mir wants to know which cloud services do you use to store your data? जी AWS, Azure, ये दो पे हम कर रहे हैं, ज्यादातर AWS ज्यादा यूज कर रहे हैं। Next question is that, Sarosh, what is Symmetry's strategy to beat the industry giants like Systems and Evincion? Systems has been getting into AI technology slowly and gradually, while Evincion has already been into it for the last few years. Also notable to note here that Mari Petroleum, which is an oil and gas company, has also announced that they intend to diversify their business by getting into AI, the IT market. What's the plan to beat the rest of the competition in the local market? अच्छा देखें, इसका ना जवाब ये है कि हम मार्केटिंग टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, कस्टमर एक्सपीरियंसेस पे काम कर रहे हैं। एवेंसियन की आपने एग्जांपल दी, वो तो हमारा कंपटीशन है ही नहीं। वो लोग काम करते हैं इंडस्ट्री 4.0, वो इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसको फोकस में रखा हुआ है। तो वो एक बिल्कुल एआई जो है वो तो देखें, उसकी जो यूज केसेस हैं वो तो बेहिसाब हैं, हर जगह पे वही होते हैं, लेकिन आप किस एरिया में काम कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफाइन करेगा कि आपकी ग्रोथ कैसी है। तो एमएनसीऑन तो हमारा कंपटीशन कहीं से है नहीं। हाँ, सिस्टम्स के साथ कुछ हद तक हम कुछ चीजों में compete कर रहे होते हैं, बट सिस्टम्स का भी अगर आप फोकस देखेंगे, इट इज मेनली ऑन ईआरपीस। उनकी जितनी ग्रोथ है रीजन में भी, वो ईआरपीस के ऊपर काम कर रहे हैं, और वहाँ वो भी वो स्पेस है जिसको हम टच नहीं करते, उसमें भी हम काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम कस्टमर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीआरएम्स में और इस तरह के सॉल्यूशंस के अंदर जरूर काम करके एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमने अभी किए भी हैं पिछले साल में काम। फॉर एग्जांपल, एक हमने कस्टम सीआरएम डेवलप किया फॉर वन ऑफ आवर क्लाइंट्स इन कतर। लेकिन मेजरली अभी हम वी आर नॉट ऑन क्रॉस रोड्स। हम नहीं देखते हैं सिस्टम्स के साथ कि हमारा कोई कंपटीशन है। और एक और जो मेजर इसमें फैक्टर आता है वो ये है कि जहां पे हम उनसे मुकाबला कर रहे होते हैं,
वो है जी एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट, वेब सॉल्यूशंस की डेवलपमेंट। तो वहां पे कुछ जगह पे हमने उनके अगेंस्ट में भी पिच किया है, कहीं पे हम जीते भी हैं, कहीं पे हारे भी होंगे। तो मेजर लेकिन वो इनका काम नहीं है, मेजर काम उनका ईआरपी पे है, वो सैप की पार्टनरशिप, माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप इन एरियाज में ज्यादा उनका फोकस। Okay. Sergey would like to know, Sarosh, that what do you think that Systems Limited has what you don't have as yet, but would like to have down the road? अच्छा देखें, सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो सिस्टम्स की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमसे 30 साल पुरानी है। Feroz, वो in English, please. Sarosh, Sergey, can you stick to English so that he oh can sure understand? sure 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 Thank you. so Thank you. systems were formed in 1973 if I'm not wrong, and we were formed in 2003. So that is a big difference. They have a lot of capital to invest, buy out companies, while we are relatively a new company, trying to get access to that sort of financial muscle, because that can help us in acquiring businesses and technologies, um, and that is one major difference, I believe, because otherwise the technology they are using, we are using wherever we are competing with them. They have the same sort of resources. um, so yeah, that is pretty much it. Yeah, all right. We have. I'm going to ask a participant to unmute himself. He has been raising his hand for a while. Mr. Kabir Jamani, can you Sure. please unmute yourself? Yeah, sorry. Just wanted to have a word regarding ये trade debts. Don't you think आपके जो receivables हैं वो simultaneously उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से आपका सेल है? यानी 31 मार्च की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे मेरे पास जो नंबर्स हैं वो 511 मिलियन के हैं, जो राउंड अबाउट आपकी सेल के हिसाब से बनता है। तो एजिंग क्या है आप लोगों की, मतलब कि कस्टमर्स के साथ जो रिसीवेबल्स की पोजीशन है वो किस तरीके से आप टैकल करते हैं? अच्छा मेजर देखें, क्वेश्चन यही था। first of all, you need to understand कि हमारे our receivables are not like any other IT company. Our receivables are in line with the billing that we generate. So there is a big division of ours which is interactive, and there we are running campaigns for our clients on Google, Facebook, and YouTube. So whatever campaigns we are running, we are the one generating invoices for that. And that fund is received first by us, and then we remit those funds to these companies outside Pakistan. So the receivables are in line with that billing, actually, not with the revenue of our company. So the billing is also, you will find the billing number in the notes of our annual reports. It is being mentioned there every year, and it will be mentioned this year as well. So there you can, when you see that number, which is much bigger than the revenue, you will see that, okay, this is a fair number. Coming to the aging part of it, so most of it is within the range of 30 to 60 days, and I don't think that any of our receivables are beyond 120 days. And to add to that, Sarosh, I mean, the fact that, I mean, in the last 2 decades almost, any bad debts have been very, very negligible. It's in thousands rather than millions. Absolutely. So, a question from Mr. Bilal Noor. He says, congratulations on your latest financials, and you guys are doing a great job. Just to clarify, are you guys expecting an increase in the financial expenses in the near future due to bank loans that you may take? So as I mentioned, right now we are monitoring the interest rate closely, and only if we have a plan for which we are in dire need of funds or in need of funds, and there is an opportunity as the interest rates are decreasing, and then definitely we will be going more towards bank financing. But at this point in time, we are still watching the interest rates going down closely. This is a decision that we have to make if there is
a decrease at desired levels of interest rates. Thank you. Another question that we have received from Mr. Sym Hassan is revenue mix in terms of USD and PKR. Similarly, what is the cost mix? So the cost is mostly local. The IT cost that you see, it has obviously the dollar impact in it, but remaining of all our costs are mostly local. HR cost is all local. We don't have any employees outside Pakistan as yet. So yeah, most of our costs are local. Very small component of it is in dollars. Okay, we have another question from Mr. Abdul Hadi. I'll ask him to unmute himself. Yeah, hi, Sarosh. Am I audible? Yes. That is a really, interesting presentation, and I really enjoyed it. I just have one question. I just wanted to know that what is the, company's goal going forward? Like, Symmetry is kind of a company which, whole of the revenues, export revenues, pour into this company. Normally, IT companies have different structures, like they, have different firms in, different global geographical locations. So you have a very different kind of, all is local cost, all the revenue is, pouring into this company. So what is your goal going forward? Will you be expanding in different offices regionally, or acquiring different companies? Because that will again fuel your export also. This will, by doing so, you will increase your IT exports or export business. So what is your comment on it? Ji Hadi, very, very pertinent question. So the first year, we didn't have any such plan. And we were basically focusing on making agreements with some of the key strategic partners. So we had been able to sign off agreements with somebody. Vistas Global is a company in Qatar. We signed an agreement with them. Then we signed an agreement with TAMP, which is based out of UK, because we are in no plans in even in future, recent future, near future, to launch a company in UK. So we were looking for such partners, and we are still looking for such partners for growth in different regions. But for GCC specifically, and I have been visiting Saudi Arabia. In fact, once in February I visited, and soon I'll be visiting there again. So there I see definitely a need for a GCC company, at least, if not a Saudi Arabian company. So we are considering establishing a subsidiary in UAE. And in fact, in the last board meeting, we had a discussion over it. We need to have a little more discussion with our board. They ask certain questions, and hopefully they will approve the proposal for establishing this company in UAE. So Sorry, yes, interjecting you, but some question relating to this has come up, that whether this will be a wholly owned subsidiary or whether this will be any yeah. other structure. So I was coming to it, Umar. So this will be a wholly owned subsidiary of Symmetry Group. But this, staying back in Pakistan, trying to raise funds for any of our ventures, it is a difficult uh, proposition. But once we have a company in UAE, that will definitely help us in discussing more openly with a bigger number of audience propositions like entering into partnerships, venturing into new businesses in partnership. So that company can, in that case, can serve as a holdco for the subsidiaries that will be further formed below that. While that holdco will be
100% owned by Symmetry Group Limited Pakistan. So this is just a plan for now. This is what we have discussed in our board meeting, as I said, and hopefully, if we get an approval, we will be again issuing a material information on this. Okay. Next question is, Saroj, that does the recent firewall issue in Pakistan affect your business? How does Symmetry plan to tackle this issue, as most of the businesses in Pakistan is on mobile usage? Okay, somehow it did affect our operations for a few days, very few days, but generally our networks, in fact, all over Pakistan, Lahore, Islamabad, and Karachi, they were not badly, very badly affected. So I believe where greater bandwidths are required, businesses like a call center, there you can see a bigger impact of this, but we didn't feel the heat as yet at least. Okay, last two questions. One is very simple, that what is the current employee count, and what's your dividend policy going forward? And this will be followed by one more question. Okay. So employee count was given on the that slide Symmetry at a glance. It is 179. We are trying to, not front load a lot. We try to keep a check on the account. Secondly, the dividend policy, as it is evident from our results last year also, though the results were for 30th June 2023 last year, and shareholders came in the month of August, September. But we did pay out a little. And this year again, we have paid out almost 10% as dividend. So moving ahead, also, we want to share with our shareholders, but at the same time, we have to keep a check that it should not hamper our growth. So the funds needed for growth is our priority. But yes, we are trying our best to share as much as we can with the shareholders. Thank you, Saroj. Okay, now Ali is asking for the next year projections. If you can give guidance, but I believe this is confidential, being a listed company. Can we move on to the next segment of this presentation, please? Are we done? All questions answered? There's only one question left, which is the earnings projection. Okay, so that we obviously cannot. Yeah. Okay, the wait is over now. Let me just. Thank you everyone for joining us today. It's been a pleasure having you here, and we truly appreciate your time and attention. Now, you might recognize me. I'm one of the consultants working at Symmetry Group, but what you probably didn't know is that this entire message was created by vidfi.ai. Even the words you just heard were AI generated. With vidfi.ai, transforming content has never been easier. I'll leave it to the CEO to take you through the full power of our platform. I hope everybody of you has watched this video and heard the audio as well. Umar? Yes, it was quite clear, Saroj. I mean, nicely done. You had a segment for Adil, I believe. Thank you, everyone. Okay, so here comes in vidfi.ai. So this a few days back, in fact, I believe last week, we launched this platform and we issued a notice to PSF as material info too. So Adil, if you can take us through this presentation on vidfi. This is a quick presentation. Basically, we'll give you an idea of the product itself, what the product is, and what it is capable of. Adil is the executive director and a fellow co-founder of mine, and is one of the sponsors. Ji Adil.
Thank you so much, Sarosh. Hello, everyone. So, as you can see on the screen, we just showed you a sample. This is an AI platform, generative AI platform. The idea, I think this is one presentation where I usually like to take people on the last slide and then I bring them back to the first one. So, Suresh, if you could kindly go back, go to the last slide, and I'll tell you the story behind this. And this is essentially the culture that has been. Bro, are you ordering takeout at F7? Open your rocks. This is the culture that we are working on now, where our different departments are working in tandem, and wherever we see the opportunity, we grasp that opportunity and see if we have the given resources to make something big out of it. So the entire idea started with this campaign that we were doing for one of our client Jazz's new brand, which is called Rocks, and they didn't have a lot of money for this campaign. So what we did, that we asked them to shoot just one video, base video we call it, and on the basis of that base video, we used AI and we created a platform, and we generated over 250 messages on the basis of that base video. All the content that you see now, every time the script that whatever script he's saying, this is all 3 messages. These are all AI generated. So Sarosh, if you could play. Listen, bro, got moved. Islamabad expressway traffic is insane right now. Why not stream cool music tracks on Rocks app while you wait? Find your music, download and subscribe to Rocks app and score a free Panda Pro subscription. Thank me later. Download and subscribe to Rocks app. Plans at Newplex. Make it a movie marathon with Rocks app. Get Tamasha subscription with Rocks app and watch unlimited movies in HD. You get the idea that we wanted to target different localities within the country, cities, hotspots, and then we created